Welcome to QHC Concepts Welding and NDT channel. And today bring you to chapter 18 of the CSWIP 3.1 inspectors course material. So this weld repairs is the topic, and as you know very well that QC inspector's life is one of taking care of the welding joints, taking care of the welding, and taking care of the welding aspects before the start of the welding, to repair welding going on, and when the welding finishes, and ultimately when the NDT results come, there will be some repairs to be done. Now repairs is a very sensitive topic. In our industry, repairs are handled different kind by different company. So as you know that many companies, small companies, okay, the client is not having any kind of pressure on them for the repair, like pressure vessel manufacturer or small companies. They don't have any kind of repair management, it seems. But when it comes to big companies which are doing Aramco project, or which are doing ADNOC projects, which are doing big client projects like Petrofac and all that, one will see that they have given KPI, which is key process objectives. So they have given the targets that for example, Aramco says that for joint basis, your joint basis, if you're doing piping job, then 5% is the target for the welding repair. So based on joint basis, should not exceed more than 5%. And if you're doing a length basis, you should not exceed 0.2%, which is a very strict test I have seen in the industry, is 0.2%. Below this KPI, nobody is giving. Norwegians, like, when I did the project for Norwegian companies for renewable jackets and topsides, their KPI was, imagine, for the length basis, 2%, which is a very, very easy target. Imagine where is 2% and where is 0.2%. To achieve 0.2% is next to impossible, and it's a huge target. I mean, to achieve that, या तो आपका कंपनी वेल्डिंग बंद हो जाएगा, या तो आपका वेल्डिंग का क्वालिटी ऐसे इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप पूछो मत. So that is what is, if you do an Aramco project, your company completely changes, transforms, and becomes very high quality, very highly productive, and qualitatively it improves a lot. So repair, I said that industry has a many ways or ways to tackle the repair. Why I am saying this? This is an unsaid truth, and I will be very truthful to you that this industry, we have to be very, very truthful, and we have to be very, very serious about repairs. Because I remember that in 2002, I was in a company, shipbuilding company, and there was many malpractices happened. They basically repair हो जाता है, तो repair declare नहीं करता है client को, और बाद में repair को internally करके उसको दोबारा से fresh joint की तरह shoot करने का लोग try करता है. क्यों? क्योंकि फिर अगर repair आएगा तो फिर foreman, welder, production, everybody get affected. Plus client भी repair ज़्यादा आएगा तो पसंद नहीं करता है वो shipyard को. Actually उसका material भी first time, second time repair होएगा तो उसको वो भी पसंद नहीं है कि उसका microstructural changes आ जाता है, and वो joint as welded new नहीं रहता है. So this is another reason why no clients will allow repair more than 2 times. This is, you are not declaring the repair, means you are already doing a lot of repairs. So that is also not good. So what happened is I left that company, and I told the manager there that this is very serious thing, that I am still now, I have not allowed this to happen. So you have to also take care in the future. Don't allow this to happen. But that manager didn't do much about that. And then one day what happened, in one of the ship, they found 300 repairs or 200 repairs which were not declared, and which were not matching. So the films were not matching with the repairs, or the films were not matching with the joint.
and then they had to do a whole fresh reshoot of all the joints in all the tanks. You can imagine that project got delayed by 3 months just because of this issue, जिसमें कार्गो टैंक्स में बहुत सारा जॉइंट्स का, क्योंकि वो भी एक क्रिटिकल वेसल था जिसमें 100% लाइंस का आरटी था. सो you can imagine that फिर then that manager lost his job. So it was such a big deal. So take repairs very I mean, take welding seriously. If you take welding seriously, you will not get any repairs. And then if you, on top of it, if you get repairs, then the management of repair is very simple. You have to declare whatever is repair and to the client and to the management, and then you should find out the ways why the repair is coming and try to eliminate the root cause, and then only you can get the welding back on track. So welding quality एक बार स्लिप होएगा तो दोबारा बहुत मुश्किल है उसको दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए. So I'm telling all this story because the QC inspector, when he comes to the site, naturally he will face all this problem. उसको बोला जाएगा कि नहीं नहीं ये रिपेयर डिक्लेयर मत करो, ये मैं रिपेयर कर देता हूँ आज रात को, और फिर कल आज रात को ही आरटी क्रू उधर ही रहेगा, वो जल्दी से शूट करेगा और आपको कल सुबह मैं फ्रेश जॉइंट ला के देता हूँ रिपेयर के अलावा सिवा. तो आपको बहुत बार सोच समझ के कदम उठाना है, और सिंपली रिलेशन रखने के लिए आप अगर गलत काम करेगा और पकड़ा जाएगा तो बाद में आपका जॉब जाने का खतरा है, और आपका सीस्विप इंस्पेक्टर का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी खतरा आ सकता है. बहुत लोगों को तो मैंने खुद ने सिफारिश किया है सीस्विप को, इसका सीस्विप सर्टिफिकेट रिन्यू मत करो, बिकॉज इसका जो बिहेवियर है वो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड है. तो यू कैन इमेजिन कि ये जॉब पे भी आ सकता है. सो ट्राई टू बी एज इम्पार्शियल एज पॉसिबल. क्वालिटी कंट्रोल का काम ही ये है कि हमारा काम है आईना दिखाना, हमारा काम है लेंस दिखाना, उससे क्या दिखता है ये हमको, उससे कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए. अगर उसमें खराब दिखता होएगा तो अगर वो प्रोडक्ट ही खराब है तो वो खराब ही दिखेगा. तो अगर वो प्रोडक्ट खराब है तो वो प्रोडक्ट को ठीक करना चाहिए, ना कि तुम्हारे कैमरा को, या ना कि तुम्हारे लेंस को, या ना कि तुम्हारे मिरर को. तो किसी को अच्छा लगने के लिए या नाम कमाने के लिए अगर आप रिपेयर छुपाएगा, then it will be a very big disaster for your company. In fact, you are doing disservice to the company. Okay, with all this basics, let us start this topic. So the reason for making repair are many and varied, from the removal of welding defect induced during the fabrication or manufacturing to a quick and temporary running repair to an item of production plant. Subject of welding repair is also wide and varied and often confused with maintenance and refurbishment when the work can be scheduled. So that is what the repair, the basic idea of repair is to repair the welding which is got a repair in entity, either in MPI, either it be subsurface, surface, or it may be voluminous form, maybe it's a crack, any kind of repair. तो मैंने क्यों आपको बेसिकली इतना सब लेक्चर शुरू में दिया, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में जो इस आदमी का पास हिम्मत नहीं है, या जिस आदमी का पास करेज नहीं है, या बात करने का अगर वो शाय है, तो ये इस फील्ड में आने से 10 बार सोचना मांगता है. You should be thinking 10 times before entering this field. In this field, we need as strong persons as possible. Why? Quality control ऐसे ही नहीं आता है. क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको लड़ना झगड़ना पड़ता है साइट में. क्वालिटी कंट्रोल आपको यूं ही कोई प्लेट में लाके नहीं देगा. क्वालिटी कंट्रोल आपको छीनना पड़ेगा, या आपको टेबल के ऊपर हाथ मार के लेना पड़ेगा, या बोलना पड़ेगा, तब आप क्वालिटी कंट्रोल में नंबर 1 साबित हो सकता है. तो मेरे पास भी ऑलमोस्ट 20-25 इंस्पेक्टर्स है. उसमें कुछ लोग शाय है, कुछ लोग वेरी स्ट्रांग है, कुछ लोग मीडियम है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में आने से पहले आपको, मैं भी ये सीस्विप पढ़ने से पहले ही मैं बोल देता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल फील्ड इज द फील्ड वेयर यू नीड बॉल्स ऑफ स्टील. ये आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा इसमें, और जब जितना स्ट्रांग है उतना ही आप तेजी से ऊपर जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर आपको लोग डरेगा, और डरने की वजह से क्या होगा, आपका दबदबा बनेगा, आपका नाम फैलेगा. प्लस आपको नॉलेज भी होना चाहिए. ऐसा ही नहीं आप आधा अधूरा नॉलेज लेके किसी के ऊपर चढ़ रहा है और फिर वो आपको गलत साबित कर देगा, तो फिर आपका भी मतलब इंसल्ट हो जाएगा आपका भी. सो टेक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर fair attitude, cool mind, and then you can do very good job in this field. Otherwise, there are many other fields जिधर आपको temperament
के हिसाब से ज़रूरत नहीं है। वो टेम्परमेंट में आप वहाँ जा सकता है कूल माइंडेड, या आप वॉच का रिपेयर का दुकान खोल सकता है, या कोई और काम कर सकता है, साइकिल रिपेयर शॉप डाल दो। बट क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में आने का है तो you need to be very, very strong. So let me again start again back to the topic. So with planned maintenance and refurbishment, sufficient time enables the task to be completed without production pressures being applied. So देखो production pressure के बारे में already बोल रहा है यहाँ पे. So, planned maintenance and refurbishment. So quality control field भी ऐसा है कि हमेशा प्रेशर में रहता है हम लोग, हमेशा टाइम का प्रेशर, शेड्यूल का प्रेशर, खत्म करने का प्रेशर सब रहता है, नो डाउट अबाउट इट। बट उस प्रेशर में जब आप भागता रहता है तो आपको समझना चाहिए क्या क्रिटिकल है, क्या नहीं क्रिटिकल है, क्या चीज चल जाएगा, क्या चीज बिल्कुल नहीं चलेगा, क्या चीज क्लाइंट पकड़ेगा, क्या चीज क्लाइंट नहीं पकड़ेगा तो भी क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए आप फिर भी टेक केयर करेगा। सो ऑल दिस इज वेरी वेरी ये फील्ड में चलने का मतलब, काम करने का मतलब है ब्लेड के ऊपर चलने का। So in contrast, repairs are usually unplanned and may result in shortcuts being taken to allow production to continue. So it is advisable for fabricator to have an established policy on repair and to have a repair method and procedure in place. So he is already telling you that because of this problem and shortcuts being taken to allow production to continue. So production का हमेशा दबदबा रहेगा कि प्रोडक्शन अनरुके चलते रहना चाहिए, करेक्ट, चलते रहना चाहिए। पर ये तरीका नहीं है कि आप अगर रिपेयर आ गया तो रिपेयर भी नहीं करेगा अटेंड, और फिर बाद में एनडीटी भी लेने का है, रिपेयर भी अटेंड नहीं करने का है, और फिर वो क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मेदारी बन जाता है वो रिपेयर को छुपाने के लिए। तो ये सब गोरख धंधा बोलते हैं हम लोग, या नेगेटिव जॉब, ये नहीं करने का जरूरत नहीं है। कोई भी आपका जॉब का प्रोफाइल में लिखा नहीं है कि आपको गलत काम करने के लिए कोई मजबूरी करेगा। तो हमको इंडिया में भी चीज को चेंज करना है, और हमको इधर मिडिल ईस्ट में या जिधर भी यूरोप में काम करता है लोग, उधर भी हमको एटीट्यूड को चेंज करना है। और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कंपनी में पहले से ही हमको बात करना चाहिए, क्वालिटी और प्रोडक्शन में बार बार बात होना चाहिए, टॉप लेवल तक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फेयर ट्रीटमेंट रखना चाहिए, और बिल्कुल ही जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जितना जल्दी वेल्डिंग में बाकी चीज़ में करेगा उतना ही आप मिस्टेक्स करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन एटीट्यूड है, जल्दी करने का काम शैतान का ही होता है। So the manual controlled welding process are the easiest to use. So actually रिपेयर में मैनुअल वेल्डिंग करके जल्दी से खत्म करने का बहुत ही अच्छा है। जब मैं पाइपलाइन बार्ज में था साइपेम कंपनी में, तो साइपेम कंपनी का जो पाइपलाइन बार्जेस होता है, कैस्टरो दुबई है, कैस्टरो भी साइपेम 7000 है। इसमें क्या होता है कि पासो वेल्डिंग मशीन, मतलब ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन, जो बेसिकली ऑटोमेटिक टिग वेल्डिंग मशीन है, वो यूज होता है ज़्यादा। तो 3 या 4 स्टेशन वेल्डिंग का रहता है, तो एक में रूट 2 स्टेशन में रहेगा, बाद में 2 या 3 स्टेशन हॉट पास और फिल एंड कैप का रहेगा। तो बट रिपेयर का एक स्टेशन होता है, और वो रिपेयर में हमेशा मैंने देखा है कि वो मैन्युअली रिपेयर करता है। कोई भी रिपेयर को दोबारा टिक से या दोबारा ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से मारता नहीं है। यही एक आपको रिपेयर प्रोसीजर बेसिकली वेल्डिंग इंजीनियर से करना चाहिए आपके कंपनी में, सो दैट इट इज क्लियर कि रिपेयर जब भी होता है तो जल्दी जल्दी हमको रिपेयर करना पड़ता है। कभी कभी हाइड्रो टेस्ट में लीक आ जाता है, तो कभी कभी हमने देखा है कि एनडीटी में रिपेयर आ जाता है। सो ये रिपेयर बहुत जल्दी करना पड़ता है, तो आपका कंपनी में प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे ये रिपेयर करना चाहिए। सो द मैन्युअली कंट्रोल्ड वेल्ड प्रोसेसेस ज़्यादा यूज होता है इसमें रिपेयर में, पर्टिकुलरली इफ इट इज अ लोकल रिपेयर और कैरिड आउट ऑन साइट। प्रोबेबली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड is of course SMAW or MMAW, and it is a versatile, portable, easy to carry out in any place, and also applicable to many alloys because it's a wide range of off-the-shelf consumables. Repairs mostly always result in higher residual stress and increased distortion compared with the first-time welds with carbon, magnesium, and low-medium alloy steels. Pre and post-weld heat treatment may be required. ये भी आपको ख्याल रखना है, रिपेयर के बाद पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है क्या। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। फिर अगर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट वाला जॉइंट है तो आपको पहले भी एक बार एनडीटी करना चाहिए पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट से पहले। क्यों? क्योंकि अब एक बार पीडब्ल्यूएसटी हो गया तो आपको अगर वो जॉइंट काटना पड़ा रिपेयर के लिए, और दोबारा अगर आपने वेल्डिंग करके दोबारा पीडब्ल्यूएसटी किया, तो 2 बार पीडब्ल्यूएसटी करने के बाद आपका पास एक पीक्योर भी होना चाहिए जो मिमिक करता है 2 बार पीडब्ल्यूएसटी करने के बाद भी टेंसाइल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेगा कि नहीं। ये सब आप बारीक से सोचना चाहिए।
PWST के बाद एक ही बार एक्चुअली हम लोग जब भी PQR बनाता है तो उसमें एक ही PWST हम लोग करता है और एक PWST करके ही हम लोग उसको टेंसाइल प्रॉपर्टीज को प्रूव करता है। और अगर रिपेयर आपको PWST के बाद करना पड़ा तो आपको 2 बार PWST करना पड़ेगा, विच मीन्स आपका PQR में वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपका ऑलरेडी नॉन कन्फर्मेशन या नॉन कन्फर्मिटी आ जाएगा। A number of key factors needed to be considered before any repair, the most important being financial worthwhile. Before this judgment can be made, fabricator needs to answer the following question. So ये जो रिपेयर है इसके लिए आपका जब आप प्रोजेक्ट बिड करता है तो बिड करने के टाइम पे आप कुछ कॉस्ट कंसिडर करता है। तो अगर आपका रिपेयर 10%, 12%, 15% ऐसे सब आ रहा है, इसका मतलब उतना लॉस आप खाने वाले हो प्रोजेक्ट में। तो ये सोच के भी आपको अच्छी तरह से काम करना है। सो कुछ फैक्टर्स है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। सो विच मेक यू थिंक एक्चुअली। सो दिस इज द कैन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बी अचीव्ड इफ item is repaired. So you have to think about things that after repair the structural integrity should not get diluted, or let's say structural integrity should not get affected. Are there any alternatives to welding? So that also you have to think. What caused the defect and is it likely to happen again? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बार बार लैक ऑफ फ्यूजन आ रहा है इसका मतलब आपका वेल्डिंग जो पैरामीटर्स है जिसमें सेटिंग बराबर से नहीं किया होगा, जिसने अच्छी तरह से मिगमैग या FCW का चैप्टर या वीडियो देखा है तो उसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है। अगर वो पैरामीटर्स में गड़बड़ हो गया तो आपको बार बार रिपेयर आएगा। तो ये आपको फिक्स करने के लिए ये सोचना चाहिए। इसीलिए हम लोग NCR रेस करता है। अगर बार बार रिपेयर आ रहा है तो NCR तो लाजिम जरूरत है देखने के लिए कि बार बार रिपेयर क्यों हो रहा है। सो हाउ इज द डिफेक्ट टू बी रिमूव्ड एंड विच वेल्डिंग प्रोसेस टू बी यूज्ड। सो डिफेक्ट रिमूव करना मतलब फॉर एग्जांपल आप स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग करने वाला है और आपको गाउजिंग करने के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन पिकअप होता है, तो नेचुरली आपको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा वहाँ पर। या फॉर एग्जांपल आप रिपेयर ग्राइंडिंग से निकालेगा या आर्केयर गाउजिंग से निकालेगा, तो ये आपको डिफेक्ट मेथड ऑफ रिमूवल भी वो रिपेयर WPS में लिखना पड़ता है। Which entity method is going to be required to ensure complete removal of defect? तो कभी कभी आपको RT के साथ UT भी करना पड़ेगा, हो सकता है क्योंकि क्रैक आया होगा समझो, तो आपको UT तो करना ही है, फिर आप RT भी किया तो अच्छा है ताकि क्रैक के साथ साथ कुछ और डिफेक्ट आया है क्या देखने के लिए हम लोग वो ले सकता है। So will the welding procedure require approval and reapproval? So this is what I already told you, that the WPS about the repair need to be done, and if there is a PWST then you need to have a dual PWST and repair and then done the testings to prove that your material can withstand 2 times PWST. So what will be the effect of welding distortion and residual stress? So these are all the things we need to ensure also, because many times you are welding 100 mm thick piping or a lot of equal number of amount of thickness of joint welding or structural, so distortion will become a big problem. So you need to take care of distortion while you are doing the repair. So what will be the effect of welding distortion? ये हमने देखा. Will heat treatment be required? This is your question which you have to answer by checking the specification. ASME section 8 or section 9 or AWSD 1.1 or ASME B31.3. You will check and you will check the heat treatment. So what entity is required and how can acceptability of a repair be demonstrated? It has to be demonstrated actually. So you have to do re-entity, re-UT or re-RT depending on your requirement. Then will approval of repair be required? If yes, how and by who? Usually हमारे ITP में ये repair witness point रहता है client के लिए. So जब भी एक repair आता है तो हम लोग promptly इसको RFI raise कर देते हैं जब भी repair होने वाला है. So that approval, the engineers or the clients will sign off on that. Well, repairs may be relatively straightforward or quite complex, and various engineering disciplines may be needed to be involved to ensure successful outcome. It is recommended that ongoing analysis of the type of defects is carried out by quality department to discover the likely reason for occurrence. So that's what is saying that many times multiple disciplines have to be involved for repair, and sometimes it is easy as only the welding department. Then frequently, or if the welding KPI is increased, then actually you'll have to do some NCR and try to do analysis. And in that case, quality department can do the analysis.
So in general, welding repairs involves detailed assessment to find out extremity of the defect, possibly during a surface or subsurface NDT method, cleaning and repair area, so removal of paint, grease and everything. Once established, excavation site must be clearly identified and marked out. ये इतना इसने सिंपल लिख दिया है बिकॉज बट इतना ये कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड थिंग है. फॉर एग्जांपल अब आरटी, जब आप आरटी फिल्म इंटरप्रिटेशन करेगा तो आपको जीरो मार्किंग होता है उधर पाइप के ऊपर. तो वो जीरो मार्किंग और ये जो आरटी का फिल्म का ट्रेसिंग है, ये ट्रेसिंग क्यूसी इंस्पेक्टर कभी बिल्डिंग फोरमैन को देता है और उसका पास तो ट्रेनिंग है, उसको मालूम है कैसा इसको ट्रेस करना है. तो उसको वो ट्रेस करने कभी क्यूसी इंस्पेक्टर को खुद जाके आरटी फिल्म का ट्रेसिंग आपको रिपेयर मार्क करना पड़ता है. यूटी है तो यूटी ऑपरेटर वहाँ पे मार्क करके ही आता है, वो तो ऐसे ही छोड़ता नहीं है क्या. सो जो एनडीटी लोकेशन वो कंफर्म करने के लिए जो आरटी का जो ऑपरेटर है वो जीरो मार्किंग करता है और वहाँ से वो एरो भी डालता है. कभी बहुत बार देखा है मैंने एरो भी वो नहीं डालता है, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा भाई साहब एरो का गलती मत करो क्योंकि हमको पता नहीं करता है. बट अगर एरो नहीं रहेगा तो ये क्लॉकवाइज को कंसिडर करता है यूजुअली. A welding repair procedure method statement for the appropriate for the alloys being repaired may not apply in specific situation. Welding process, consumable technique, controlled heat input, and interburst temperature all will need to be approved. So separate welding repair procedure होता है हर एक साइट में. स्ट्रक्चरल के लिए अलग, पाइपिंग के लिए अलग, फिर अलग मटेरियल है तो फिर अलग. So depending on that, you need to have good amount of welding procedures. So use of approved welders. नेचुरली अप्रूव्ड वेल्डर्स को यूज करना चाहिए. यहाँ पे मैं एक और चीज बोलेगा जो मैं हमारे साइट में हमेशा बोलता हूँ, जो भी मैं साइट पे काम किया है, जो भी कंपनी में, हर एक कंपनी को अपना डेडिकेटेड रिपेयर वेल्डर बनाना चाहिए क्योंकि रिपेयर वेल्डर का स्किल जो है वो अलग है नॉर्मल वेल्डर के मुकाबले में. सो अगर आपने आपके कंपनी में 2 या 3 रिपेयर वेल्डर्स को ट्रेन किया और हर बार जब रिपेयर आता है तो उन्हीं वेल्डर्स को यूज किया तो देखेगा आपकी उसका स्किल जो है रिपेयर वेल्डर का बहुत इंप्रूव हो जाएगा और बाद में आपको दोबारा री रिपेयर नहीं आएगा. तो यह सब आपको ट्रेनिंग देना है आपके वेल्डर्स को और आपको एक रिपेयर टीम बनाना है. और अगर आपका कंपनी में 400-500 वेल्डर है फिर तो आपको 7 to 10 वेल्डर्स को अच्छा से ट्रेन करना चाहिए एज अ रिपेयर वेल्डर. तब क्या होगा, आपका कंपनी का मतलब क्लाइंट भी बोलेगा कि हाँ इनको वेल्डिंग मालूम है और इनको मालूम है कि वेल्डिंग रिपेयर इज अ निश एरिया और लेट्स से इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग. नॉर्मल वेल्डर को आप बोल देगा ये जाके रिपेयर कर देगा वो, बट फिर वो उसमें रिपेयर का दोबारा रिपेयर आने का चांस है क्योंकि क्या उसको क्या ट्रेनिंग नहीं दिया गया इस मामले में. सो उसको जो ढूंढना, खोजबीन करना, वो रिपेयर जो था है क्या रिपेयर है, इधर गाउजिंग के टाइम पे वो रिपेयर मिला क्या, वो रिपेयर कंप्लीटली गया क्या, फिर वो अगर एक्स बेवल है तो कितना अंदर गया, डीप गया वो. तो ये सब चीज है जो रिपेयर वेल्डर को अच्छा से ट्रेनिंग दे सकता है. अगर किसी का अच्छा वेल्डिंग इंजीनियर होएगा तो उनका कंपनी में ये हमेशा इम्प्लीमेंटेड रहता है. ओके, ड्रेसिंग द वेल्ड एंड फाइनल विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रेसिंग द वेल्ड एंड फाइनल विजुअल क्यों मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ लोगों को समझ गया होगा. जो इसमें 2 नंबर ही करता है वो लोग को मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ड्रेसिंग द वेल्ड एंड फाइनल विजुअल. एनीवे, ड्रेसिंग द वेल्ड एंड फाइनल विजुअल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वेल्डिंग. फिर एनडीटी प्रोसीजर एंड टेक्निक prepared and carried out to ensure that the defect has been successfully removed and repaired. Any post-repair heat treatment and then final NDT technique बाद में apply protective treatment. So ये सब steps है welding repairs का. Production repairs are usually identified during production inspection. Evaluation of reports is by welding inspector or NDT operator. Discontinuity in the welds are only classed as defects when they are outside the, of course, permitted range of the standard or specification applied. Before any repair, a number of elements need to be fulfilled. So at defect analysis, if it is surface breaking or it's mid thickness or it's near the X bevel, root pass, or all need to be checked. So at the fusion phase of the problem could be cracking or lack of sidewall, or maybe because of the process also many times repairs coming. So analysis is very important. और अगर प्रोसेस के हिसाब से रिपेयर आ रहा है इसका मतलब वो आप वेल्डिंग प्रोसेस यूज करेगा तो सब जगह रिपेयर आएगा, इसीलिए तो उसका एनालिसिस करना जरूरी है. फिर असेसमेंट. फिर एज अ डिफेक्ट इज ओपन टू द सरफेस, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन or dye penetrant inspection may be used.
to gauge the length of the defect and ultrasonic testing to gauge the depth. Typical defect, sidewall fusion, lack of sidewall fusion, plain view, typical defect का इसमें कुछ फोटोग्राफ दिया गया है. Excavation. So कैसे निकालता है रिपेयर को? So if a thermal method of excavation is used, arcade gouging. So gouging is the most preferred method for carbon steel. It may be a required for qualifying a procedure as a heat generated may affect the metallurgical structure. So arcade gouging अगर आप करने वाला है रिपेयर तो नेचुरली वो आपका PQR में होना चाहिए. वो PQR में जब आप रिपेयर कर डाल के आर्केड गाउजिंग से गाउज करके दोबारा रिपेयर करके वेल्डिंग करके उसको टेस्टिंग के लिए भेजेगा तो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर सब कुछ टेस्ट हो जाएगा. सो नेचुरली इट विल बिकम अ PQR. To prevent cracking, it may necessarily be applied to a preheat, depth width ratio. ये सब आपने पहले पढ़ा है तो यहाँ पे भी वो यूज होगा रिपेयर में भी. Okay, so side view of excavation of light subsurface defect. तो सबसरफेस तो बहुत बड़ा दिखाया इसने, बट यूजुअली नॉर्मिनल ग्राइंडिंग होता है सरफेस में. फिर आपने एक्सकवेशन ऑफ डीप डिफेक्ट देखा, फिर आपने फाइनली जॉइंट को वेल्ड करके हुए देखा. तीनों का फोटो डाला है. फाइनल फुल रिपेयर रूट का भी डाला है. क्लीनिंग एट द स्टेज ऑफ ग्राइंडिंग रिपेयर एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू रिस्क ऑफ कार्बन बिकमिंग इम्प्रेग्नेंट इनटू द वेल्ड मेटल. तो सिर्फ आपको आर्केड गाउजिंग करके जो इमीडिएटली वेल्डिंग शुरू करता है वो उसको बोलने का, ये अवॉइड करने का, क्योंकि आर्केड में आपको कार्बन आने का बहुत ज़्यादा खतरा है. तो आपको आर्केड गाउजिंग के बाद थोड़ा ग्राइंड भी करना चाहिए, सभी आपको वेल्डिंग शुरू करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे क्रैक आने का ज़्यादा चांसेस है, स्पेशली अगर वो स्ट्रेस में रहेगा तो. एनडीटी मस्ट टू कंफर्म दैट द डिफेक्ट हैज बीन कंप्लीटली एक्सकैवेटेड. ऑफ कोर्स ये भी आपको एनडीटी दोबारा करना पड़ेगा. फिर ये रिपेयर किया हुआ का एक फोटो डाला है उसने. एनडीटी कंफर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल रिपेयर. So naturally it will be in-service repairs. In-service repairs are when the repairs are going to be carried out for lines which are already working. So when somebody is who have done shutdown will understand, or those who are working in the live refinery or live plant, power plant or something, they will know what I am trying to say. Most in-service repairs are very complex and the component is likely to be in a different welding position कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. है बहुत ही डिफिकल्ट में आपको करना पड़ता है, बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि शटडाउन का हर एक डॉलर, हर एक घंटे का हजारों डॉलर्स होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी में रहता है लोग. सो रिपेयर एक वहाँ पे तो ट्रेंड बंदा बहुत ही जरूरी है. तो वहाँ पे बहुत सारा केयर भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपका लाइव प्लांट में आपको इलेक्ट्रिकल चेक करना पड़ता है, खतरा है. फिर बाजू में कोई इक्विपमेंट होगा जो हाई टेम्परेचर में होगा, उसका खतरा है. फिर उधर ऑयल स्पिलेज होगा, क्योंकि ये तो पुराना फैक्ट्री या रिफाइनरी या पावर प्लांट है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गिरा हुआ रहेगा, तो क्लीन नहीं रहेगा. तो आपको फिर वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है काम करने के लिए. प्लस आपको जो परमिट चाहिए, परमिट इंस्पेक्टर आएगा, पर परमिट का भी कुछ भी वायोलेशन करेगा आप तो परमिट बंद कर देगा, काम भी आपका बंद हो जाएगा. तो आपको बहुत ही ज़्यादा ही केयर करना पड़ता है अगर आप लाइव प्लांट में करता रहेगा. तो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मेरे पास आरामको का प्लांट कार्ड है, प्लांट में आरटी करने का मेरे पास कार्ड है. ये आज का कार्ड नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने आरटी एनटीटी छोड़ दिया, क्योंकि मैं 2001 से ही मैंने एनटीटी छोड़ दिया. बट 96 से 2000 तक मैं एनटीटी फील्ड में था, तो मैं सऊदी में एनटीटी CCS में था और मेरे पास प्लांट कार्ड था, तो मैं जाके वहाँ पे रेडियोग्राफी भी करता था. But then slowly I understood that quality control field is to go higher in your career, and that's why I took welding inspection course, then came and becoming a welding inspector, and from there I climbed the ladder of till the QA/QC manager today. In many instances, the standard or code used in the design and the structure will define the type of repair that can be carried out and given guidance on the methods to be followed. Standards imply that when designing or manufacturing a product, it is important to consider the maintenance regime and repair procedure. Repairs may be required during manufacture, and this situation should also be considered. So repair not only when it is there in your fabrication company, but when it is going and getting installed, that time also we may need to be repairing it. So ये consideration करना चाहिए, but usually
SMAW टेक्निक हर एक रिपेयर के लिए फिट हो जाता है, नो प्रॉब्लम. It is very important that the repair and maintenance welding are not regarded as activities that are simply straightforward. So नहीं मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही झिकझिक का काम है ये रिपेयर करने का, और स्पेशली इन सर्विस होएगा तो और भी झिकझिक का काम है. सो इज वेल्डिंग द बेस्ट मेथड ऑफ रिपेयर. सो ऑल्सो वेल्डर प्रेशर में रहता है, मतलब एक तो उसको वेल्डिंग कंप्लीट करना है, रिपेयर प्लस अगर क्लाइंट का विटनेस है तो क्लाइंट तो खुद खड़ा है देखने के लिए, फिर तो और भी टेंशन में रहेगा. So if repair is needed because a component has a local irregularity or a shallow defect, grinding out any defect, blending or smoothing to the counter may be acceptable. But कभी-कभी वो भी acceptable नहीं होता है क्योंकि वो hot work हो जाता है बाद में. So if the steel is poor weldability or fatigue loading is severe, it is often better to reduce the so-called factor of safety slightly than risk putting defects, stress concentration, residual stresses into brittle material. तो आपका मटेरियल अगर बहुत ही क्रिटिकल है तो आप रिपेयर इंजीनियरिंग को डिक्लेयर करके पूछ सकता है कि इतना रिपेयर है, इसको हम लोग रिपेयर करना चाहिए या ऐसा ही छोड़ देना चाहिए. तो वो लोग क्या करेगा, उनको FEM में कुछ एनालिसिस है वो करके वो लोग डिसाइड करके आपको बोलेगा कि नहीं नहीं रहने दो, ये रिपेयर हुए तो भी कोई मटेरियल को प्रॉब्लम नहीं आएगा सर्विस में. पर कभी कभी बोलेगा वो नहीं नहीं कर दो, क्योंकि आजकल कोई क्लाइंट रिस्क लेना नहीं चाहता. So is a repair like earlier repair, one sort of repair is routine repair, but important to check that is next one is not totally different. So दो तीन प्रोसेस यूज करके आप रिपेयर नहीं कर सकते. पहले SMW में रिपेयर किया, फिर रिपेयर हुआ, फिर आप टिक में वेल्डिंग किया, ऐसा नहीं करना चाहिए. What is the composition of weldability of the base metal? The original drawing usually gives some idea of steel involved through the specification limits may then be less stringent, and the specification may not give enough detail to be helpful. If sulfur bearing machine free steel is involved, it could give hot cracking problem during welding. Actually, these problems come during the in situ or in service repairs. Many times we don't know accurately what is the material, because what happens over a period of time where there are drawings, but drawings are not done as built, because ये लोग क्या करता है बीच बीच में पाइप बदलते रहता है और बाद में उसको अपडेट नहीं करता है ड्राइंग को. तो ऐसे कंडीशन में आपको या तो कोई लैब एनालिसिस से मटेरियल फाइंड आउट करना है या आपको PMI करके मटेरियल का फाइंड आउट करना पड़ेगा. So the small cost of analysis could prevent a valuable component being ruined, ill-prepared repairs. तो नेचुरली अगर डिजास्टर में आपको सब मटेरियल काला दिखता है तो कार्बन स्टील ऐसा नहीं है ना. तो आपको ये जो है स्मॉल टेस्टिंग इज अ स्मॉल कॉस्ट कंपेयर टू, आप अगर मिस्टेक करेगा तो फिर बाद में पूरा का पूरा वेसल ही खराब हो जाएगा, तो फिर आपको नया बनाना पड़ेगा. What strength is required from repairs? So higher yield strength for the repair weld metal and greater residual stress level on the completion of the welding, risk of cracking, clamping. ये सब बोलने क्यों लिखा है, बिकॉज जब इन सर्विस में मटेरियल ऑलरेडी 10 years पुराना होता है तो वहां पे अगर आप वेल्डिंग करेगा तो आपका वेल्डिंग कंपोनेंट नया हो जाता है. तो नया और पुराना का बीच में जो बराबर से तालमेल नहीं होगा, या इफ इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी वेल्डिंग, if you have not taken proper preheats and all the precautions, then that your welding will become weak matter in the entire material and it may have problems. So when you are approaching power plant or refinery shutdowns, just ensure that you have taken adequate information from welding engineer and don't do the job if you don't know what material it is. So can preheat be tolerated? So yeah, sometimes high level of preheat also makes conditions more difficult for the welders, and parent steel can be damaged if it is tempered at the lower temperature. The steel being repaired may contain items damaged by excessive heating. So ये सब preheat कहाँ करना है नहीं करना है, फिर ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा. फिर आपको ऑस्टेनेटिक इलेक्ट्रोड्स may be needed for preheat, but more expensive nickel alloys usually do not, but may be sensitive to high sulfur and phosphorus content in the parent steel if diluted into the weld metal. So shutdown welding आप देख सकते हैं कि कितना केयर लेना पड़ता है वेल्डिंग इंजीनियर को. He has to not only know the material but other surrounding atmosphere, everything you need to know in order to come up with a WPS. So can softening or hardening of HAZ be tolerated? So softening and hardening of heat affected zone ये बहुत ही important matter है,
क्योंकि बाद में क्या होएगा, यहीं से रिपेयर का शुरुआत हो जाएगा. So softening of has is likely to be very high strength steels. It is likely in very high strength steels. Particularly if they have been tempered at low temperature, it cannot be avoided, but extent can be minimized. Hard HZ in particular are vulnerable to the service conditions, leads to stress corrosion, and solution containing H2S may demand hardness below 22 HRC, although fresh aerated seawater appears to be tolerated to 450 H. Excessive hard HZ may require PWST to soften them, providing cracking has been avoided. So आपको कभी-कभी PWST भी करना पड़ेगा because of the softening of HZ area. Is PWST practical? So although desirable, PWST may not be possible for some reasons. Preheating is not. So preheating जहाँ avoid करना चाहिए वहीं पे PWST भी avoid करना पड़ता है. For large structure, local PWST may be possible, but care should be taken to abide by the relevant codes because it is easy to introduce a new residual stress by improperly executing a PWST. So in service में ये भी problem है कि आप कभी-कभी PWST नहीं कर पाते. So PWST is needed for several reasons, and the reasons must be known before considering whether it can be avoided. But PWST करना भी जरूरी होता है कभी-कभी, और करने से कभी-कभी problem भी होता है. तो ये सब decision welding engineer पे छोड़ के हमको काम करना है. So will the fatigue resistance of the repair be adequate? So if repair is in an area highly stressed by fatigue, and particularly if it is not of a fatigue crack, inferior fatigue drive can be expected unless weld surface is ground smooth and no surface defect left. Fillet welds in which root cannot be ground smooth are not tolerable in areas of high fatigue stress. So जहाँ पे fatigue stress का बात आता है, so आपको फटीग लाइफ देख के ये रिपेयर का चुनाव करना चाहिए. बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ डिफेक्ट्स हमको छोड़ देना पड़ता है, या उसके ऊपर आप फिलेट या कोई ऐसा वेल्ड करके छोड़ देता है. क्यों? इसमें फिर वो नेक्स्ट शटडाउन तक चल जाएगा ये हिसाब से. सो डिपेंड्स. Will the repair resist its environment? So repair, besides corrosion, it is important to consider that a possibility of stress corrosion and corrosion fatigue, thermal fatigue, ऑक्सीडेशन इन सर्विस. सो एक नया इंस्पेक्टर को इतना सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो शटडाउन में जाता है तो ही विल बी अंडर द सुपरविजन, बट नेचुरली यू विल कम अक्रॉस ऑल दिस प्रॉब्लम्स. सो अलर्ट रहो. अगर शटडाउन जॉब जा रहा है तो ये सब आपको इन्वॉल्व हो जाना है इसमें, और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलेगा. तो कैन द रिपेयर बी इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड? ये भी सोचना है आपको. एज वेल्डेड रिपेयर्स, रिपेयर विदाउट PWST नॉर्मल व्हेन द ओरिजिनल weld was not heated or heat treated. Some alloy steels and many thick section components require PWST to maintain a reasonable level of toughness, corrosion resistance. However, PWST of component in service is not always easy and is even possible, and local PWST may cause more problem than it solves. So that's the thing. So this is the repair chapter that's done. Next we will go for the next chapter. Till then, goodbye.